उठाता रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं उन सब ने इस सहमति के साथ स्वीकार कर लिया। इस पे हम चर्चा करेंगे। जो घोषणा पत्र है उसमें कौन कौन से मुद्दों पर जिक्र किया गया है उस सब पे विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। Absolutely, Manoj ji. India's G20 presidency has marked a significant milestone in its global leadership role. With India taking the presidency for the first time, it is steering discussions and initiatives among the world's major economies to address complex challenges. With its diverse economy, tech prowess, and commitment to sustainable development, India is bringing unique perspectives to the table. During the presidency, India is focusing on various issues like inclusive growth, digital innovation, climate resilience, and equitable global health access. By leveraging its presidency, India is fostering collaborative solutions that not only benefit its own population but contribute to the broader global well-being, reinforcing its spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. And joining us for deeper understanding on these developments are very illustrious guests. Joining us through virtual platform, Mr. Sanjay Bharadwaj, Professor, School of International Studies, JNU. And also joining us, Mr. Manjeet Kriplani, Executive Director, Gateway House. I welcome both of you to Sansad TV and thank you so much for joining us. Mr. Kriplani, let me begin the program with you. What are the big takeaways for you from today's development? Well, the big takeaways are really that India has managed to get these very, very disparate countries. For the last year, we've seen everybody has got a different view of everything, and India has managed to get people on the same table and actually come out with a leader's declaration. I mean, that in itself is a miracle, and it shows the kind of hard work that has been going on with tens of thousands, maybe more, hundreds of thousands of people. It's particularly with the Prime Minister's sort of personality, just the strength of his personality and his desire to create this joint statement using every ounce of his goodwill. This has been a really tough year, and it's been a long time that the world has had a moment to feel optimistic, and this is that optimistic moment. बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो घोषणा पत्र उभर के सामने आया है जिसमें एक एक करके उन तमाम मुद्दों का उल्लेख है, आतंकवाद की बात की जाए या यूक्रेन युद्ध की बात की जाए, रूस का जिक्र नहीं है लेकिन यूक्रेन का 4 बार जिक्र है, आतंकवाद का मुद्दा है, साथ ही विकास से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, समावेशी विकास की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कूटनीति के लिहाज से? देखिए, मैं कहूँगा कि जो ये सबमिट हुआ है G20, ये इसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे चैलेंजिंग टाइम में G20 सबमिट हुआ है जब दुनिया 2 तरीके के संकट चैलेंजेस फेस किए हैं। पहला कोविड-19 और दूसरा जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और जो सबमिट हुआ वो भारत में हुआ। तो संदर्भ ये है कि भारत में हुआ। भारत एक ऐसी भूमि है जो आतंकवाद से कई दशकों से ग्रसित है। दूसरा कि जो ग्लोबल साउथ के जो संकट बढ़े, चाहे पैंडेमिक से बढ़े, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर से बढ़े, फूड सिक्योरिटी का फूड क्राइसिस हुआ, एनर्जी क्राइसिस हुआ, मेडिसिन क्राइसिस हुआ, और जो बाकी जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं, जिसमें क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं या डिजिटल गैप्स की बात कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे एक साथ एक प्रेसिंग इश्यूज थे जो ग्लोबल साउथ फेस कर रहा था। उस वक्त ये सम्मेलन हुआ और भारत ने, क्योंकि दुनिया क्या हो रही, दुनिया में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट चल रहा है। एक तरीके का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्टेटस को है, उसको चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर ग्लोबल साउथ में भी लीडरशिप का एक क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि चाइना का जो एक्सेस था ग्लोबल साउथ में, मैं कहूँगा चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आप ये देखिए उनमें जैसे चाइना ने लगभग $135 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ अफ्रीका में, लेकिन वो कंट्रीज डेवलपमेंट ना होने के बजाय डेट ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस वक्त एक जो ग्लोबल साउथ है वो एक लीडरशिप की तलाश में था, और भारत एक ऐसा कंट्री इमर्ज हुआ है जो इस पूरे ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दे रहा है, जो ना केवल
ग्लोबल नॉर्थ के साथ डायलॉग करने की अपनी क्षमता रखता है, साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की क्षमता रखता है। तो वहां पे जो 2-3 मुद्दे उभर के आए जो डिक्लेरेशन से, पहला आतंकवाद का, कि आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल एक प्रॉब्लम है, इसको रिजोल्व करना। दूसरा जो भारत ने कहा, क्योंकि भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री रहा है, 1945 से यूएन का सदस्य रहा है और हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता रहा है। तो इसमें कहा गया है कि सभी देश, दुनिया के सभी देश यूएन चार्टर का रेस्पेक्ट करें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कोएग्जिस्टेंस को रेस्पेक्ट करें, और कोई भी किसी भी की भूमि पर आर्म्स के माध्यम से या जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कब्जा ना करें। इस तरीके का जो एक डिक्लेरेशन है, निश्चित रूप से जो छोटे देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए एक प्रोटेक्शन G20 सम्मेलन ने, दिल्ली डिक्लेरेशन ने दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं, जो मैं कहूंगा इसको डिवाइड करूंगा, एक ग्लोबल कॉमन्स है और दूसरा ग्लोबल गुड्स है। तो ग्लोबल कॉमन्स जो नॉर्थ साउथ दोनों को के लिए कंसर्न है, उनको जैसे क्लाइमेट चेंज है, उनको भी सामने रखा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ का जो ग्लोबल गुड्स की बात है, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, एजुकेशन की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या बाकी जो दूसरे प्रेसिंग इश्यूज हैं, हंगर है, पॉवर्टी है, इन मुद्दों को भी एक जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट किया गया है, उसमें ग्लोबल साउथ के जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको भी शामिल करके इसमें ग्लोबल नॉर्थ के सामने रखा गया है कि आप खाली ग्लोबल नॉर्थ के कंसर्न को मत देखिए, ग्लोबल साउथ के कंसर्न को देखिए, जो आज के दिन सफर कर। और मुझे लगता है इसमें सक्सेस, सबसे बड़ा जो सक्सेस था, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो सक्सेस रहा वो ये रहा कि अमेरिका ने $200 बिलियन का एक फंड, डेवलपमेंट फंड देने को बढ़ाने की बात कही, जिससे ग्लोबल साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाए। Absolutely. So the professor has mentioned two very important points, of course, about the existence, the peaceful existence and territorial integrity. And more notably, since we're talking about Russia and Ukraine war, the G20 New Delhi Leaders Declaration has called for a comprehensive, just and durable peace in Ukraine and urged member states to refrain from the threat of use of force to seek territorial acquisition or act against the territorial integrity of any state. The declaration also stressed the use or threat of use of nuclear weapons to be inadmissible. Kripalani ji, the sense very much is the same, what India has been enunciating, that today's era is not of war. Yes, absolutely. And I think also that what has happened is that people are very tired of fear. They're just very tired of the war. We have not even recovered from the pandemic, and we've been plunged into this unnecessary war in Ukraine. We're all bearing the brunt of it. So I think there is a certain amount of, in a sense, we've all sort of arrived. There's no more really people at the lower end and the high table and the low table. We've kind of all arrived at the same level. And so bringing the war to an end is very important. I hope that India will use this opportunity to push for peace talks, because this is helping nobody. I think that we can expect to see some of this coming out of becoming relevant after the G20. And although India has not actually said anything about participating, Mr. Modi said that it's not an era for war. I think India will be quite an important player in bringing an end to the war, to persuade the West to really just back off. You already heard what the NATO head said. He said that the war was supposed to have started because Russia already warned us that we should not have countries that are on its, NATO should not be on its border. So you can already see some of the softening of the position. And this remarkable G20 statement, where there's been a lot of bonhomie and a lot of optimism, I feel that we will see an end to this, at least some kind of winding down. जी, कृपलानी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्योंकि बात
यूक्रेन का जिक्र है, सहमति का जो घोषणा पत्र उभर के सामने आया है उसमें रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस का जिक्र ना करते हुए भारत ने जो कूटनीति का एक संतुलन दिखाया है, इसको आप कैसे देखती हैं? I think that I think that India has really stayed the path. It has stayed. It has said. It has said what it has to say, and it has stayed the path. I don't know whether we will see. This is the G20 is an economic forum. It is said very clearly that this is not a geopolitical forum, but there has to be peace so that the economics are not disturbed. So this is not the forum for that, but clearly it has been mentioned. It is a little less aggressive than the previous statement, and clearly this is why I say I think people are just tired of the war and they see that it's not getting anyone anywhere. So also not having both Russia and China, there was less friction here. So in a more relaxed manner, people were able to come together, with a statement and with an intent that will be more amenable to winding it down. जी संजय जी, इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र यूक्रेन का है घोषणा पत्र में, लेकिन रूस के नाम का जिक्र भी नहीं है। और अगर जियोपॉलिटिक्स की मैं बात करूं, कूटनीति की बात की जाए, तो एक संतुलन के साथ भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जिस तरह से एक संतुलन का जिक्र करते हुए यूक्रेन और ये कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, एक संदेश दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। ये भारत के जो प्रधानमंत्री या भारत के पास जब से G20 की प्रेसिडेंसी आई ट्राइको में, इंडोनेशिया के बाद भारत से, तो इंडोनेशिया समिट में ही मोदी जी ने साफ साफ इंडिकेट कर दिया था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और मोदी जी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आज के दिन जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन से भरा हुआ है। चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कन्फ्रंटेशंस हो, या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, फंडामेंटलिज्म है, वॉर है। मोदी जी ने दो बातें साफ कही कि कोई भी समस्या का हल आप युद्ध और फोर्स के माध्यम से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये इसका समस्या का समाधान दो ही तरीके से हो सकता है, या डिप्लोमेसी से या डायलॉग से। और जब तक डिप्लोमेसी और डायलॉग नहीं करोगे, और जो सबसे बड़ा एक सफलता इस G20 की जो देखने को मिलती है डिक्लेरेशन में, कि हमने डायलॉग किया और डिप्लोमेसी किया, उसके आधार पे एक हम कंसेंसस दिल्ली डिक्लेरेशन में बढ़ा पाए। मोटे तौर पे देखिए, भारत का एक विदेश नीति अपना रहा है, और वो विदेश नीति सक्सेसफुल विदेश नीति इसलिए रहा कि एक तो हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, साथ ही साथ मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है। हम खाली एक ब्लॉक के साथ अलाइंड नहीं है, हम रशिया के साथ भी उतने ही अलाइंड है जितना अमेरिका के साथ में अपना इंडिपेंडेंट स्टेट रखते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए, हम उस प्रिंसिपल पे आधार पे, भारत ने उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो सबसे, और साथ ही साथ सबका सम्मान। हम सबका सम्मान भी कर रहे हैं। उसी गर्मजोशी से मोदी जी सबसे मिले, चाहे वो चीन के प्रधानमंत्री हो, रशिया के विदेश मंत्री हो, या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, सबका सम्मान और सबका प्रयास को ध्यान में रखते हो। तो जो मोटे तौर पे देखने को मिला कि दुनिया जो कन्फ्रंटेशन और दुनिया जो सफरिंग है, चाहे वो आज के दिन हर तरीके का सफरिंग है, मेडिकल, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इतना क्लाइमेट इश्यूज आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है पाकिस्तान में, फ्लड से अभी मोरक्को में जिस तरह अर्थक्वेक आया, या श्रीलंका में डेथ ट्रैप हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज मल न्यूट्रिशन और अंडर डेवलपमेंट से जो एक अपनी बेसिक। और सबसे बड़ी जो सफलता, मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि भारत के लीडरशिप में, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के कंसर्न को समझता है, और उसकी वॉइस को मजबूत करने के लिए भारत ने अफ्रीकन यूनियन के सदस्यता की जो एडवोकेसी की, वो बहुत बड़ी एक सफलता है। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन डेवलपिंग कंट्रीज है और उपनिवेशवाद की शिकार रही है। पहले यूरोपियन उपनिवेशवाद था, बाद में चीन का उपनिवेश, आर्थिक उपनिवेशवाद बढ़ गया, चीन ने डेट ट्रैप की तरफ ले गया। बिल्कुल संजय जी बिल्कुल एक एक मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि जो घोषणा पत्र है दिल्ली का, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से खासे महत्वपूर्ण है कीर्ति। और एक एक करके उन मुद्दों पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दर्शक हमारे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। Absolutely, Manoj, and before that declaration, a very important statement that Prime Minister Modi made today, that after COVID-19, a huge crisis of lack of trust has come into the world. Conflict has deepened this trust deficit. And as the president of the G20, India invited the entire world to come together and first and foremost transform this global trust deficit into global trust and confidence. Kripalani ji, what could be the roadmap ahead for it? Yes, two things. Just I'm going to remind you that the very last clause of the leaders' declaration says, recalling our collective actions to stem earlier global crises, we are determined to steer the world out of its current challenges and build a safer, stronger, more resilient world, etc. The two things that have been taken is digitization, the digital divide. There's been a very, very strong effort to bridge the digital divide, and that has come from India because of digital public goods. The second thing is there are lots of connectivity plans. There is the connectivity between India and the Mediterranean. There is the connectivity, the Trans-Africa corridor. There is the Bay of Bengal corridor. And what happens is that the world was always connected earlier, right, when it was pre-colonization, etc. And people flowed freely, trade occurred freely, etc., etc. The borders have been cut, but I think this is a very strong attempt now to reopen all these borders. Obviously, it is a way to counter Belt and Road, because the Belt and Road is very specific, but this will be transcontinental connections. And it will be a strong counter. जैसे रूस की नाम भी नहीं ली थी, चीन का नाम भी नहीं लिया in this statement, but definitely there is a lot of, there are 2 or 3 powerful countries whose names are not in here. The US has been holding back on the digital world, but by using the private sector and saying the private sector has to be brought in when we are bridging the digital divide, well, it gives a place for the very powerful US private sector and digital to come together. So I would say digitization and connectivity corridors, these are the 2 big things that will bring the world together. Absolutely, ma'am. And since we're also talking about the outcomes, Professor Bharadwaj, India's G20 presidency has been the most ambitious in history. With 112 outcomes and presidency documents, India has more than double the substantive work from previous presidencies. I'm not getting your voice. Sir, we are talking about the outcomes. With 112 outcomes and presidency documents, India has more than doubled the substantive work from previous presidencies. Let's take a look at the data of last 3 years. Indonesia, 2022, 50 outcomes. Italy, 2021, 65 outcomes. Saudi Arabia, 2020, 30 outcomes. Clearly, our G20 presidency strives to bridge divides, dismantle barriers, and sow seeds of collaboration that nourish a world where unity prevails. Your thoughts, sir? No, definitely. See, Brazilian head of the state said that how we will meet the parameters set by India. You know, India had conducted more than 200 meetings in more than 60 cities of India, and had shown that India is a diverse, is with full of diversity, and within this diversity we are maintaining unity. And this has given a clear-cut message to the global world that yes, the world is with full of diversity, but we believe in one earth, we believe in one family, we believe in one future. So we have to have work together. We believe in the principles of Vasudhaiva Kutumbakam, means that whatever the problems is the problem of the global world. So we have included all the issues or sufferings of the global south. Yes. Whatever it is there, I told about global goods or global commons, everything had been included. There is serious non-traditional security threats to the developing world, particularly if I indicate about the climate change. Climate change had impacted adversely to the developing countries. See the Maldives, they are going to merge if the sea rise. See Bangladesh is against South Asian countries, if there is 1 feet rise of the
water of the sea, that one-third Bangladesh will merge. My point is simple, that all the things Madam Kirpalani has also indicated about the digital divide. That digital divide is very, very, very serious issue. And then now new issues are pressing. What are the new issues? Is that cyber security, Yes. artificial intelligence, sea lane communication, the way the Chinese are moving, heading towards their expansionist or aggressive policies. These are the clear-cut threat to the smaller states. The way the Chinese has come with the standard map in 2023, that 5 Southeast Asian countries had criticized, Japan had criticized, India has criticized. So these are the pressing issues that India had identified, not naming China, not naming any country who believes in aggression, but it is visible to the world. And now we are looking at how we can secure, how we can have a better energy transition, green transition. You know, International Solar Alliance was invited in this. So we are focusing about a better future for the world. So these are the issues. That's why that the number of declaration had gone more than 100. That was not there, because we really put an effort to come out with these consensus document that is accepted to all the leading powers in the world. You know, this represents about 67% of the population, 75% of the trade, and 90% of the GDP. So these would be implemented by different institutions of the world, like WTO, like IMF, and all that. They will take care of all these issues. So my simple submission is that this comprehensive document is a charter before the world, that the world, and we have set the rules. We have set the rules. If Xi Jinping is not coming, but they have to follow these rules. If China has to follow these rules, the other aggressive powers, they have to follow these rules for the peace and stability of the world. That had been in the UN Charter from the very beginning. So point is very simple. And then one more thing, very important point, that the UN could not do much in last 3, 4, 5 years for the peace and stability. That's right. I think that an alternative institutions had, though this is informal, but alternative institutions has evolved to represent the voice of the global South in Asia, in Africa, in Latin America. And that next presidency is going to Brazil. Brazil is also representing the voice of the global South. So these are the very important, and I think this is a great diplomatic victory for India. जी संजय जी, अगर इस आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया, सबको साथ चलने की, एक साथ चलने की बात कही, जिस तरह से उन्होंने सबको साथ लेकर चलते हुए विकास, खास तौर से मानवता केंद्रित विकास पर जोर दिया, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह का उनका संबोधन था उसमें जो मानवता पर जोर था, क्या आप मानते हैं कि उसने कहीं ना कहीं जो दिल्ली का घोषणा पत्र है और जिसको इतनी कामयाबी मिली है, क्या एक कारण वो भी है क्योंकि भारत का दृष्टिकोण सबको साथ लेकर चलते हुए विकास और शांति के रास्ते पे चलने का जो आह्वान है, वो एक बहुत बड़ा कारण है? देखिए, ये बात साफ है कि मोदी जी ने इंडिकेट किया है कि जो वर्ल्ड है फुल ऑफ डाइकोटोमी है, कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो इस डिक्लेरेशन की है, जो उनके भाषण में साफ रिफ्लेक्ट हो रही है, कि इस डेवलपमेंट को ह्यूमन सेंट्रिक, मानव केंद्रित विकास की तरफ बढ़ाना चाहिए, ना कि जीडीपी सेंट्रिक और स्टेट सेंट्रिक, क्योंकि स्टेट सेंट्रिक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को डेवलप करता है। ह्यूमन जो सफरिंग है, जो इंडिविजुअल्स की जो सफरिंग है, उसको एड्रेस नहीं करता। तो जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, और तभी कहते हैं कि सबका साथ मतलब इंक्लूसिव, सबका विकास मतलब इंक्लूसिव, समावेशी विकास। लेकिन उसमें दो बातें और कही जो बहुत बड़ी है, कि आप बॉटम अप अप्रोच भी रखिए, टॉप डाउन अप्रोच भी रखिए। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि हर व्यक्ति को विश्व कल्याण के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि सबका प्रयास। लेकिन हर देश को भी विश्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी। तो सबका प्रयास भी हो और सबका विश्वास भी हो, कि उन वैल्यूज में, क्योंकि भारत मूल्यों की बात करता है, भारत
देखिए जो डाइकोटोमी है चाइना ने क्रिएट की है, एक तो डेवलपमेंट की, एक वैल्यूज की। भारत दोनों बातों को रखता है कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट मूल्य रहित नहीं होने चाहिए, मूल्यों के साथ रहना चाहिए। ये भारत, ये भूमि है, ये लोकतंत्र की भूमि है, ये भूमि है महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की भूमि है। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, सत्य में विश्वास करते हैं, और उस सत्य और अहिंसा को ध्यान में रखते हुए हम विकास में विश्वास करते हैं। तब सबका विकास होगा। एक तरफा खाली डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और मानव मूल्यों को हम पीछे रख देंगे तो सचमुच जो सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का वो नहीं होगा। तो सीधी सीधी जो Absolutely. मोदी जी के बातों में देखो, उनको उनके भाषण को आप गौर से सुनेंगे तो साफ साफ बात कहते हैं कि वो जो भारत का दर्शन है, जो भारत का एक ट्रेडिशन है जो सदियों से चला आ रहा है, आप ये कहिए वैदिक पीरियड से जो चला आ रहा है, उस ट्रेडिशन की परछाया उनकी भाषण में दिखती है। और तभी उन्होंने कहा कि मानव केंद्रित विकास होना चाहिए। जी, और ये एक Absolutely. बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है For global good, of course, and since you were talking about सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और उसके बाद सबका विकास, but there are several challenges as well, Kripalani ji. Look at the global challenges. Let's talk about turbulent global economy, the north-south divide, the distance between east and west, management of food, fuel and fertilizer, crisis, the terrorism, cybersecurity, health, energy and water security. How do we move towards concrete solutions for these challenges, not just for the present, but also for future generations? So one of the ways to do it is really India is the crucible for the world, right? Inside every Indian village is a global village. So if India can resolve any of these problems, it then becomes a resolution for others to adopt and adapt. And I think we've been doing that quite well. All the experimentation that will be taking place in India, its replicability will be found in other countries. We know, it's not too different from Southeast Asia. It's not too different from the rest of South Asia. So we have to continue to experiment on our own to improve our own environment and our own challenges, because those will then be the solutions for others. As it happens, we don't have the kind of resources that other countries have. Africa has very rich resources, which is why China is there. Yes. We're not a country rich in resources. We are a country rich in human capital. And that is why there has been such an emphasis on a human-centric development, because that is what we have. So we have to develop our human resources. We have to develop our innovation. All this has been very clearly enunciated in this statement: skill development, developing our human capacity, education, etc. But we have to do it on our own. And, in terms of digitization, when we talk so much about the India Stack and digital public goods, etc., people would tell us last year, because we did some research on it, how great could this be if India's neighbors don't adopt it? Well, India's neighbors have adopted it, right? So it's not, although it's been tested at continental scale, subcontinental scale is now adopted, and there are more than 24 countries that use the UPI. So Yes. our solutions are very easily adapted. So we need to work really hard on innovation. So I think the G20 statement, almost everything that it says is what India should apply to itself. And this particular year, the G20 year, India's had a three-dimensional goal, right? One goal has been an international goal to see how India projects itself. The second has been a very G20 specific goal. And the third goal is a domestic goal for its Yes. own country. So I think that people have been extremely inspired. And because there's a lot to be said for the Jan Bhagidari initiative. There have been meetings that have been independent of the official meetings. I don't even know whether these meetings are counted in the official 200 meetings, but they have been across the board. So with this enthusiasm, it is now really very important for us, and particularly our states and our municipal corporations, to take very seriously this document and start to implement some of these things at a very basic level, at the municipal level, at the rural level, at the panchayat level, at the state level. And once we do that, then it automatically sort of rolls into the national level and then becomes an example for the rest of the world. So we have to set the right example first. We also, before you go ahead, we also have
as the professor said, we've got Brazil and then South Africa coming up next for their G20 presidency. Our problems are quite similar. And also, this is the IPSA group, right? India, Brazil, South Africa. The IPSA agenda overlaps with the G20 agenda. So we have a clear runway in which to do things right. So if we can do it at home, we can do it nationally, we can do it with IPSA, regionally and with IPSA, and then internationally, I think we'll be in a very good place, and so will the world. Absolutely, ma'am. A very important point that you made there, that we have to emerge and set example for the rest of the world. Professor Bharadwaj, as Kripalani ji said, that the success story of India in human-centric development can be replicated in other parts of the world. Would you agree, sir? Absolutely. That is, I tell you one thing. This Nataraj Pratima statue, that itself is revealing everything. That this Pratima reflects or represents cycle of life. What is the cycle of life? From darkness to the brightness, because it is inspired from the Konark temple, the temple of sun, in fact. And we are looking forward a brightness in other part of the world, and that is the fundamental factor that India had asked, that let the African Union become the part of the G20, because African Union had also equally suffered, oppressed, and had been deprived from the development in the history, and till date they are also victim of the imperialism. So they need a better. The people of Africa needs a better future. I tell you one very important point, that India and Africa had very strong connections, particularly from historically, we definitely from the Gandhian period and earlier also apartheid and all that. But India had been a source for the Africans for medical, for education, and for the tourism. That number of good students from African countries are studying in Indian universities, Indian colleges. We can see that number of Africans are coming for the health issues. Definitely, India has been extending for the improvement and betterment of the African nations for on the cheaper price that they can that very affordable price that they can come. So of course this is that India is just not looking that enlightenment within the country, but for the global, and that enlightenment should be based on everything. It's that India is advocating about the balance between the spirituality and materialism, and that a balanced development, because that's why India talks about International Solar Alliance. India, that's why talked about energy transitions, that you will have a greener world, and that greener world would be good for the countries, particularly the developing countries. So simple point is that this Kal Chakra is representing everything, the Indian mindset for the brightness for the entire world. That let the entire world shine. It's not just India, and on the ethos and principles that Indian philosophy had historically and from the ancient period. जी बिल्कुल संजय जी, हम लोग बात कर रहे हैं मानव केंद्रित विकास पर, समावेशी विकास पर। किस तरह से ऐसा विकास जिसमें मानव कल्याण का भाव छिपा हो। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, क्योंकि कई मंचों से भारत ने इस बात को कहा भी है, साबित भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कई बार इस बात को कहा है कि किस तरह से डिजिटल सुविधाओं के जरिए भारत ने कल्याण का जो रास्ता, कल्याणकारी योजनाओं का जो रास्ता अपनाया है, चाहे वो गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए, वो एक उदाहरण के रूप में खास तौर से इस G20 की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया, उसकी खासी चर्चा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की फिलॉसफी आपने देखा होगा, भारत की फिलॉसफी है अंत्योदय। अंत्योदय मीन्स जो आखिरी व्यक्ति है समाज में, उसका भी बराबर का विकास होना चाहिए, और इसीलिए मानव केंद्रित विकास की बात की, क्योंकि ये बात है कि मैंने कहा इस समाज में हर तरीके के इनइक्वलिटीज है। जेंडर इनइक्वलिटी है, कास्ट इनइक्वलिटी है, रीजनल इनइक्वलिटी है, और ग्लोबलाइजेशन ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये इम्बैलेंस जो है
दुनिया में व्यक्तियों में इसको बढ़ा दिया है। तो भारत हमेशा से अंत्योदय की बात करता है कि हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि जब तक व्यक्ति को फ्रीडम फ्रॉम वांट, और मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अमर्त्य सेन ने कहा कि पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, और जब तक व्यक्ति के पास अपनी जीवनोपार्जन के लिए धन नहीं होगा, तब तक वो गरीब है। और ये तीनों चीजें आप किसी न किसी रूप में इस ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगा। चाहे वो अफ्रीका में चले जाओ, चाहे वो लैटिन अमेरिका में चले जाओ, चाहे वो एशिया में चले जाओ, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तभी भारत एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहा है कि जो सफरिंग हमारी है वो सफरिंग हमारी सबकी है, और इसमें हर व्यक्ति का ह्यूमन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए। वो इंक्लूसिव बहुत बड़ा वर्ड अपने आप में, समावेशी है। ऐसा नहीं कि जो ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किया कि कुछ क्षेत्रों को, कुछ व्यक्तियों को धनवान बना दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्लोबलाइजेशन का वैसे चाइना ने उठाया, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थे, जो ग्लोबल साउथ के बाकी कंट्रीज थे, उनको ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट थे। हमारे पास इतनी डीप पॉकेट्स नहीं थी जितनी चाइना और जापान के पास थी। भारत अब संबल है। भारत दक्षिणी अफ्रीका में भी विकास ले जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने जिस तरीके से तंजानिया को आप लीजिए उदाहरण के तौर पे, तंजानिया में हमने आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, हम वहाँ का एकेडमिक कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो जिस तरीके का कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हमारा और अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ है, वो डेवलपमेंट सेंट्रिक है, मार्केट सेंट्रिक नहीं है। दोनों में फर्क है। जब मार्केट सेंट्रिक होता है वो जीरो सम गेम होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट सेंट्रिक विकास होता है तो वो विन विन होता है, और वो व्यक्ति के विकास में योगदान देता है। तो ये जो इसकी जो मूल भावना है G20 की, जो पूरे सम्मेलन की, वो व्यक्ति आधारित विकास, व्यक्ति केंद्रित विकास, यही इसका केंद्र था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास जो है वो मानव केंद्रित विकास है, ना कि राज्य और जीडीपी केंद्रित विकास है। और उसी के आधार पे पूरा डिक्लेरेशन तैयार हुआ, और ग्लोबल साउथ की जो नीड्स हैं, जो डिजिटल डिवाइड्स हैं दुनिया में, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने की बात की, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे बाकी सुरक्षा के क्षेत्र में हो। क्योंकि जो दोहरी नीति अपनाई है, जैसे आतंकवाद पे दोहरी नीति हमेशा अपना, वेस्ट का एक अपना क्राइटेरिया होता है, भारत का अलग होता है, चाइना का अपना होता है। आप लोकतंत्र में देखिए, चाइना कहता है हमारा जो तरीका है वही लोकतांत्रिक तरीका है, अमेरिकन अलग डेफिनेशन है, भारत का अपना डेफिनेशन। तो ये जो दोहरे मापदंड बना रखे हैं व्यक्ति के विकास के, जिसमें आतंकवाद बिल्कुल संजय जी, अगर कहा जाए कि G20 का जो मंच है, जो दिल्ली में जिस तरह दुनिया के प्रमुख देशों के नेता जुटे हैं और उन्होंने एक सहमति के साथ इसको स्वीकार किया है कि आतंकवाद का अलग अलग स्वरूप नहीं होता है, आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो गलत होता है और उसका विरोध हर स्तर पे होना चाहिए। यह संदेश भी है इस शिखर सम्मेलन का। आकृति, एक महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो ये पहलू रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर, क्योंकि भारत हर मंच से दुनिया को यह कहता रहा है कि आतंकवाद, ये अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद ये नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। और एक बार फिर भारत ने इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए दुनिया को ना केवल संदेश दिया, बल्कि दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न जो देश हैं वो भी भारत की इस बात से सहमत हुए हैं, और ये सहमति इस घोषणा पत्र में दिखाई भी देती है, जो नई दिल्ली के नाम से जानी जाएगी। जी कृति। Absolutely, Kripalani ji, since we're talking about the voice against terrorism, India has always enunciated that there's no good terrorism, no bad terrorism. Terrorism is terrorism, and it has to be condemned, and it has to be obliterated in one voice. Ma'am, do you think that terror financing, a very important component that India has always been talking about, G20 presidency of India has given a very strong message against terror financing? Yes, it has. It has not only given a strong message on terror financing, it has also given a very strong message on corruption. Because, the more there are wars, the more corruption there is. And so wars, whether they are formal or informal wars, terrorism is informal wars,
even former wars. There's a tremendous amount of corruption. And as you know very well, when there is a war in one place and somebody puts on arms, somebody else picks it up. So this is a very, very dangerous global environment that we live in. And unless the war in Ukraine can be wound down, it will, if it can be wound down, it will not give encouragement to others who are looking for the ways of violence to sort of take up arms and to also buy these arms. There are already many of the arms that were given to Ukraine that are out in the market. And who knows what's going on after this. But we have to be extremely careful. For India particularly, if we are on a rising path, and so is the global south, we're finally seeing things working our way. India as a spokesman for the global south has been very persuasive, and I think it has managed to tell the rest of the world that, you know, imperialism and colonialism really not left us yet. So please just step back and allow us to develop in our own natural way. If India can be alert, if the global south can be alert, if they can be allowed to just flourish without promises of weapons, etc., I think that we'll be in a much better place. But the corruption paragraph, I thought, was very pertinent and very strong. Absolutely. Professor Bharadwaj, your thoughts on corruption, terror financing and terrorism and India's G20 presidency and the strong message that we've sent out today to the entire world. See, I don't differ from that. You know, the Western world and the Chinese, they have double standard about understanding the issue of terrorism. But we are sufferer. We know what is terrorism, and we had been suffering from a long. But because the countries, they have linked terrorism with strategic interest, and the countries has linked democracy with strategic interest. But India, what India has set in this, I would give you four parameters that where India tried to connect the world. Yes, of sir. course, in this declaration, one is that cultural connect, and that cultural connect that in this G20 had talked that this cultural connect should be two-way. It's not a single way. Only Western values dominate us. Let the global South's value also dominates and flourish in the world. Second, that the physical connectivity. If it should not be a one-way trade, it should be that these countries should not suffer from trade deficits. There should be the two ways commercial connections or trade. Let the India also go for the startup and Atmanirbhar and Make in India programs, and let the Indian goods also flow in the Western market and other countries' market. Third, very important is, I would say, this knowledge connectivity, and that knowledge connectivity is very significant. That it should not be that, and this creates all kinds of divides: the digital divides, technological divides, all parameters. So where Japanese Prime Minister has correctly pointed out that we have to meet this knowledge disconnect, and we have to connect the world through the different knowledges has been generated in different parts of the world for the welfare of the human being. And for that, you need a physical connectivity. Physical connectivity means connecting the world either through I2 or U2, or like by different programs in the India's East and India's West with the Middle Eastern countries. So these are four type of connectivity that would definitely minimize the divide between the North, South, and within the South. And I think that should not be based on the vested interest. You know, the way the Chinese trying to connect the global South was in fact one way traffic, and it was bilateral. I think we need a more global initiatives to connect the world, to meet the digital divides, to meet the knowledge divides, and that would definitely bring the human development. And for that, you need a sincere efforts. The corrupt, ill managed system would not go well for the welfare of the world. Until there is only possible
while we will have a sincere efforts to meet the needs of the most vulnerable person in the world. We have to adopt the UN definitions of good governance, where it is talking about the welfare of the last person or the most vulnerable sections in the society. It should not be divided between the majority, minority, religion, race, and all that should be parted away for the better or welfare of the people. जी बिल्कुल कृपलानी जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि अगर G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन की बात की जाए, जाहिर सी बात है अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह दुनिया के संपन्न देशों को भारत ने कई मुद्दों पर सहमति के साथ एक सहमति का घोषणा पत्र उभर के सामने आया। आप कैसे देखते हैं और वो कौन से पहलू हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसके जरिए आप ये हमें समझा सकती हैं, बता सकती हैं कि भारत के लिहाज से जो पहला दिन है आज शिखर सम्मेलन का वो कितना महत्वपूर्ण रहा, भारत ने क्या हासिल किया है, क्या संदेश है इसका पहले दिन का? आई थिंक पहले संदेश है कि एक्चुअली डिप्लोमेसी इज वेरी इम्पोर्टेंट जी। एंड क्या हुआ है, एक साल से डिप्लोमेसी की बात ही नहीं हुई है। एंड इंडिया हैज बीन कंडक्टेड एक्चुअली accelerated diplomacy. So the very strong message is that A, diplomacy works, and B, sincerity works. And last of all, we are a large country. We have not moved this way or that way. We have walked a very fine balance. We do not take sides. We are taking our own side, and therefore by taking our own side, we are taking the side of many countries which are like us. And so we have managed to keep some global equilibrium, and this statement is really it shows that we have thought very hard about this. We could have gone either way, but we have really stayed the middle path, and we have stayed on message. We've said nothing new. We've reiterated what we said before, and so in a sense there are no surprises. There are just reiterations. The surprise for everybody else is that we actually got a consensus document out, and that is a real achievement. I hope that we do not sit on our laurels. After this, we have to get down to work ourselves. We have to work very hard with the Brazilian presidency, because this is going to show the G20 doesn't end here. Next year, when Brazil takes it up, we have to hand over the baton to the Brazilians. They are very organized. They're really looking forward to it. We must participate actively. And onward to South Africa also. Similarly, we must start putting into play some of the things that we have learned here, that we have reiterated. This is such a comprehensive document. It has left nothing outside, everything that is of importance to a large part of the world that looks just like us. So now is the time to start working hard. If we are talking about capacity building, we've already built a considerable capacity at the top and somewhat at the bottom. We need to now start expanding our middle capacity, because really, as you know, it is in the middle that most countries sit, and that is the weight that a country carries. So, hard work ahead. जी बिल्कुल। संजय जी, इस बात को मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है भारत के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है। आपने कुछ पहलुओं का उल्लेख किया, कुछ का जिक्र आपने किया। अगर बात की जाए इस शिखर सम्मेलन की, तो भारत ने एक तरफ जहां अपनी सांस्कृतिक जो उसकी विरासत है उसका संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया है, सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया है, ह्यूमन जो मानव आधारित विकास है उस पर जोर दिया है। आप भारत की दृष्टि से क्या देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका, क्या उपलब्धि रही पहले दिन की? दो बातें साफ साफ भारत ने रिफ्लेक्ट की। पहली बात कि ये देश जो है विविधताओं का देश है, ये सांस्कृतिक विरासत का देश है, और भारत एक सॉफ्ट पावर है। जो भारत की हमेशा एक जो धाक है दुनिया में, एक सॉफ्ट पावर, एक कल्चरल पावर के रूप में, एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भारत अपने आप को रखता है। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि खाली सॉफ्ट पावर ही नहीं, भारत के पास हार्ड पावर भी है। इसके पास अपने संसाधन है, अपने आप को डिफेंड करने की क्षमता है, और भारत जरूरत होगा तो एक स्मार्ट पावर की तरह आप उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी बात जो साफ साफ हुई
वो गांधीयन फिलॉसफी है कि वाद है तो प्रतिवाद है, जब वाद है प्रतिवाद है तभी तो संवाद होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन उस ट्रस्ट डेफिसिट को हम संवाद डायलॉग के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से रिजॉल्व करेंगे। और जो डिक्लेरेशन आया ये संवाद था, प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद का ये संवाद आया, और ये संवाद जो सबको सिंथेसिस जिसको कहेंगे, ये सबको एक्सेप्टेड हुआ कि भाई मानव कल्याण, मानव केंद्रित विकास ही आखिरी उद्देश्य है हर व्यक्ति का, हर समाज का। तो ये ही तो ग्लोबल वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार का उद्देश्य है, जो जिसको हम कह रहे हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, कि जब तक हम ये नहीं कहेंगे। Absolutely. So there's debate, there's discussion, there's dialogue, and of course then there's decision on human development. And of course, as we've been saying, that one family, one earth, Vasudhaiv Kutumbakam, that of course has been the theme of our presidency. But on that note, it's a time for a short break. We'll be right back with more on G20 Presidency of India. आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। G20 के लिए राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में यह सम्मेलन हो रहा है। सबकी निगाहें आज भारत की तरफ हैं, जिसमें सबसे अधिक चर्चा हो रही है G20 के लोगो की, जिसे 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है और इसमें तिरंगा का जीवंत रंग शामिल है। G20 समिट का लोगो और थीम खास तौर से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। G20 के प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर गोलाकार विश्व स्थित है।
इसके नीचे भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम अंकित है, जिसका अर्थ होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इस लोगो के साथ ही देश का नाम भारत भी लिखा है। The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर वार्ता का आयोजन 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। G20 की बैठक में 20 देशों का एक समूह है जो साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम होता है किसी खास विषय के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना। वसुधैव कुटुंबकम्।